get started. Sorry that the class was not available due to some system issue. Okay. So let's quickly start with the session. I hope I'm audible to everyone properly. If you cannot hear me properly, please let me know. Okay. All right. So I'll just quickly share my screen. Um, just a moment. Okay. Just let me know if you can hear me. Okay, if you can see my screen, I'm sorry. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay, fine, thank you. So this is what we need to start today. That is how we are going to deal and apply the conditional formatting. Okay, today this is what we need to learn. That is how we are going to go ahead and apply the conditional formatting and how we can use those text related data. Okay, so this is what we need to continue today. So we'll quickly start with the last data set what we have continued. So I'll quickly load it into my new table. So this is the data what we are supposed to deal with today. Okay, as if I discussed with you that this is a kind of the data which is related to a pharmaceutical company. Okay, so this is a kind of a data what we have gone through. I'll just quickly go through the overview of that. Okay, so it's like we have a serial number, name of HCP, academic status, visit, executive name, awareness, CME, interested, vaccination, and the next one is your feedback. Okay, this whole set of column is a feedback. Now this is something what we need to deal is difficult. Okay, like handling the feedback. Okay, feedback ko handle karna is very difficult. So this was the concern of the client because the feedback was so big that it was like no one could each and every like read it. Now let me tell you, this is just a sample of amount of data. Okay, सो इससे ज़्यादा उनके पास डेटा था, बट अभी जो उन्होंने मॉडल बनाने के लिए दिया था दैट दे हैव गिवन अ सैंपल फॉर दैट. ठीक है, एक कुछ होल डेटा सेट में से एक प्रॉपरली फॉर्म मतलब छोटा सा चंक अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस. सो नाउ आई विल बी टीचिंग यू अ न्यू concept over here. Before that, let's go through with the whole data set. तो ये सारे data sets हैं which is already there to me. Okay, which are given to me. Okay, now this is something, so let's go and do some ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर दैट. ठीक है, अभी पहला कंसेप्ट ये है कि मुझे ये फीडबैक में से कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि मुझे हेल्प करे टू क्रिएट अ रिपोर्ट. ओके, नॉर्मली आई कैन क्रिएट लॉट मेनी ग्राफ्स इनटू जितना मेरे पास अमाउंट ऑफ डेटा है. विद दैट रिलेटिव थिंग आई कैन डू इट. ओके, बट इंस्टेड ऑफ लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा है इसमें से मैं वैल्यूएबल इंसाइट कैसे निकालती हूँ दैट आई एम गोना शो यू. सो वैल्यूएबल इंसाइट हम लोग कैसे निकालेंगे? सो फॉर दैट I use a strategy of conditional formatting. Now I'll show you what exactly is the conditional formatting. Okay. Now here in conditional formatting, this is what we need to do it in terms of transform data. ठीक है, so ये हम power query में करते हैं. And here you will see an option over here. If you can see here, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको add columns. You need to click on add columns. Add columns करने के बाद there is an option conditional column. Can you see here? Okay, so click on conditional column and you'll get an option like this. Okay, custom. Customer matlab custom means the new column name. I'll give a new column name, suppose as feedback type. Okay, feedback type. अभी मैंने क्या किया? It's like I have written that into diary. मैंने डायरी में से कुछ keywords निकाले हैं. This is what my understanding, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि दैट यू नीड टू एनालाइज दिस फर्स्ट कि आप इसमें से कौन से कैटेगरीज निकाल सकते हो. तो रैंडमली आप मैंने कुछ डेटा को पिक किया. लाइक there is lot of things into this. Okay, so list may be incomplete since there are lot many things into that. तो मैंने क्या किया, what I have done, I have read some things over here. मैंने यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा read किया. Okay, then मैंने क्लाइंट से भी बात किया इसमें कि what all things I can
लाइक ये क्या है, ये किसको रिलेटेड है। देन मुझे इसको रीड करने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस फीडबैक थिंग, आई केम अप विथ सर्टन काइंड ऑफ रेजोल्यूशंस। नाउ व्हाट आर दीज रेजोल्यूशंस, आई विल शो यू दैट। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट व्हाट क्लाइंट हैज गिवन मी डायरेक्टली, ठीक है। क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, दिस इज माई इंटेलिजेंस व्हाट आई हैव यूज्ड इनटू दैट। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक इसके लिए, फीडबैक के लिए होमवर्क किया है। लेट मी टेल यू, आई हैव डन द होमवर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फीडबैक। ये डायरेक्टली नहीं आया है क्लाइंट से, ओके। सो व्हाट आई हैव डन द होमवर्क, आई विल शो यू दैट। सो दिस इज समथिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। सो मैं इसको एक नाम दे दूंगी, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आई गिव इट हियर feedback type. Okay. Now in this feedback type, what I want something to be done on feedback column. So मैं column name क्या select करूँगी? Feedback. Contains. यहाँ पे I'm going to select contains. Now ये अभी अगर अगर आप option देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, enter value, select a column and parameter. Select a column भी आप कर सकते हो. After this class, okay. After this class, use this select column and see what is happening. Today I'm showing you enter a value, ठीक है. Enter a value can be a b c or 1 2 3, मतलब a value can be a number also, a value can be a string also, तो ये दोनों भी accept करता है। Now first of all मैं क्या करूँगी यहाँ पे, I want that wherever it is written AMC, कहीं पे भी AMC लिखा है तो उसका आउटपुट दे दो AMC. So I am like creating something. I'll show you. This is a condition I have given कि feedback में अगर मेरा AMC दिखता है कहीं पे भी पूरे टेक्स्ट में, AMC दिखता है तो उसको एक कैटेगरी में डाल दो, एक फीडबैक टाइप में डाल दो AMC. This is one condition I have written. Now I'm writing one more condition. That is when I click on add clause, I get the next condition. तो अब मैं condition डाल रही हूँ in the feedback again contain. So there are many options over here. See, equals, does not equal, begins with, does not begin with. So lot many things. So this is the whole session. What we are going to conduct is a conditional one. Okay. So contains. Okay. मैंने डाल दिया कि contains. क्या contains? Like for example, अगर मेरे किसी भी feedback column में एक ऐसा word आता है busy, कहीं पे भी busy आता है, so that I'm going to put in one category, that is busy. Okay, so ये है मेरा second condition. Okay, now I'll be adding up one more column. एक मैंने ये सब मेरा होमवर्क है इसमें, ठीक है. No one gave me the answer. मैंने सोचा ये कैटेगरीज में पुल आउट करती हूँ. तो नेक्स्ट इज माय सॉरी फीडबैक. ओके, जिस फीडबैक में लिखा है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग अ कीवर्ड, जिस फीडबैक में CME एक टाइप का उनका टाइप है, कैटेगरी है. सो अगर वो है तो पुल आउट करो उसको, पुट इट दैट इनटू अ कैटेगरी CME. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर क्लॉज, लाइक फीडबैक में अगर इफ इट्स रिटन, बहुत सारे फीडबैक में इट्स लाइक प्राइस के बारे में बात किया था तो आई एम पुटिंग प्राइस. अगर प्राइस के बारे में कुछ लिखा है सो पुट दैट इनटू अ न्यू कैटेगरी, दैट इज प्राइस. Okay. In feedback, if it is written, कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आए थे मुझे, प्रोग्राम अवेयरनेस, अवेयरनेस करके ऐसे भी कुछ प्रोग्राम ये नाम आए थे, तो आई जस्ट पुट अवेयरनेस. ठीक है, एक ऐसे भी कीवर्ड्स मैंने जब स्टडी किए थे तो बहुत सारे थे, सो आई जस्ट पुट इट इन प्रोग्राम अवेयरनेस करके एक कैटेगरी मैंने बनाई. सी इट इज वेरी सिंपल, इसमें आपको डैक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है. येस, वी कैन राइट अ डैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मेट ऑल्सो, बट ये इन पावर क्वेरी दिस इज अ बेस्ट सोल्यूशन, बहुत ईजी है. व्हाट यू कैन गो अहेड, सो ये आपको हमेशा यूज आएगी. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट आई पुट, ओके, एक ऐसे भी वर्ड आए थे मेरे पास, दैट इज रिकमेंडेशन. सो रिकमेंड, ऐसे ऐसे वर्ड्स आए थे, सो आई लेट्स पुट दैट, आई एम सॉरी. Okay, but you need to make sure that you are putting a right spelling. Okay, तभी ही वो fetch करेगा. Okay, कुछ words आए थे study करके.
आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट इन कैटेगरीज. जरूरी नहीं है यही टाइप्स होंगे, और भी बहुत होंगे, बट यू नीड टू फाइंड आउट दोस कुछ कैटेगरी जो कॉमन दिखे मुझे. सो आई थॉट ऑफ पुटिंग दैट. मैंने सोचा उसको डिवाइड करके. सम फीडबैक्स वर रिलेटेड. कुछ बोल रहे थे वीडियोस दे वांटेड टू सी और समथिंग. सो आई जस्ट पुट इट वीडियो. I'll just put it in the category videos. Okay, so these are some categories जो कि मैंने फीडबैक से होमवर्क करके, ओके, स्टडी करके थोड़ा बहुत उसको एक एक को, एक एक नहीं बट ऑलमोस्ट बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मैंने स्टडी किया, और ये कुछ कॉमन मुझे कैटेगरीज मिले जिसको मैंने पुल आउट किया. सो आई वांटेड कि ये नाम से अगर कुछ कीवर्ड्स है, so give these names, otherwise, okay, else, over here it's written else you need to write other. ठीक है, अगर ये नहीं है तो उसको अदर में डाल दो. So just see if I get something. Okay, now if you can see over here, I'll just quickly show you. तो मुझे ये कैटेगरीज यहाँ पे मिल गए. Now do you know the reason why exactly I have done it? इसका मैं कोई ग्राफ भी क्रिएट कर सकती हूँ, इसको मैं एज अ स्लाइसर भी यूज कर सकती हूँ, तो आई कैन डू इट एनीथिंग. सो लाइक दिस यू कैन go ahead and क्रॉस चेक लाइक प्रोग्राम अवेयरनेस, लाइक फॉर एग्जांपल. ओके, तो कुछ ऐसे मैंने, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अवेयरनेस, अवेयरनेस, सो अवेयरनेस. सो इट्स लाइक जहाँ पे भी अवेयरनेस आया है तो दैट कीवर्ड्स आई हैव पुल्ड आउट इनटू फीडबैक टाइप. सो लाइक दिस व्हाट आई हैव डिजाइन, मैंने अपने डेटा को मैनिपुलेट किया, अपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा को मैनिपुलेट किया, and then I came up with certain kind of columns. If you can see, there is one column over here, other. Other में वो आए हैं जो ये particular keywords उसमें है ही नहीं. So that's the reason it has been pulled out. Okay, and this is how is what we can go ahead and check it. Like we can go ahead and make such kind of things. Okay, now if you can see over here, just a moment. ओके, अगर आपको वापस बैक जाना है इन दिस कैटेगरीज, आपको यहाँ पे वापस बैक जाना है, आई विल जस्ट चेंज वन थिंग. ओके, सी, मुझे कुछ एडिट करना है तो यू नीड टू गो इन अप्लाइड स्टेप्स. ये जो गेयर आइकन है इस पे डबल क्लिक करना है आपको. ओके, नाउ आई गॉट रिकमेंड, मतलब वो कुछ फेच नहीं कर रहा था प्रॉपरली कीवर्ड, तो दैट इज द रीजन इट केम अप. नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, ओके, नाउ दिस वेर इन आई शो यू समथिंग अबाउट प्राइस. ओके, अगर ये प्राइस का एक कीवर्ड है, ओके, प्राइस के दो यहाँ पे आए हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इफ आई राइट द स्पेलिंग इनकरेक्ट, व्हाट हैपेंस, लेट मी सी. ओके, एक प्राइस का कॉलम है, यहाँ पे मैं सपोज स्पेलिंग गलत डाल देती हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ रॉन्ग स्पेलिंग. लेट मी सी इफ आई एम गेटिंग दोस प्राइस. मुझे मिल रहा है प्राइस? नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट because the spelling I have used for price is incorrect. So obviously it's not going to fetch that relevant data. तो अगर आप चाहते हो that your data should be applicable and it should be properly in this conditional formatting, so this is again something, ये वे easy है करने के लिए, but it is also a case sensitive kind of, but because if you're not putting the spellings correctly या कुछ और चीजें you're not putting that properly, to not going to fetch the data, extract नहीं करेगा वो data को. So now if I'm putting a correct one, I can go ahead and see, now I got the price. Okay, so understood the difference. I wanted to show you, kid, like whenever you want to use this conditional formatting, you have to be very specific about the spellings into this. Okay, and the values as well. As अगर आप values को related कर रहे हो तो it should be ऑलमोस्ट करेक्ट. नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है, ठीक है. ना ये नल वैल्यूज जो है आपके, सो डू यू थिंक दैट इज इट फिजिबल, दिस काइंड ऑफ नल वैल्यूज आपको निकाल देना चाहिए उसको, नल है तो ये. एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो. सी, आई एम गेटिंग सम नल वैल्यू, शुड आई रिमूव इट? We can't remove, but we can replace it with something. Exactly. We can't remove it, we cannot remove it. Why we cannot remove it? Because
ये डेटा दूसरों को रिलेटेड है, दिस डजंट मीन दैट इट्स नल मतलब ये स्क्रैप डेटा है, नो। सो लास्ट टाइम पहले ही मैंने क्लास में आई हैव शोन यू समथिंग, इट्स लाइक जब भी आपको ऐसा कोई वैल्यूज मिलते हैं, इट्स लाइक these kind of things you're getting it, just jump up over, yeah. Okay, is this kind of values if you get it, so it doesn't mean that you're going to remove that directly. First you need to check whether it's important or it's not important. The other way out, like if you want to check out, is replace values. Okay, replace values matlab, in this I'll just try to put null over here and I'll say no. Okay, okay, I think the data type is incorrect. Okay, zero मैं डाल देती हूँ यहाँ पे. I need to change the data type for that. ठीक है, 0 or 1 you can put it. ठीक है. Now suppose if you want to put something else over here, तो मैं पहले क्या करूँगी, ये decimal number को, okay, if I want to put awareness है या नहीं है, so in this I can also use numerical data as well into this, and as well I can use non-numerical data. Non-numerical matlab yes and no. Again, for that you need to manually go ahead and change this thing. So it depends on you, like how you want to go ahead with that. Now I felt like this can be used into yes no kind of category, okay, instead of 1 and 0. So I for changing it, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, like if I'll show you once again, रिप्लेस वैल्यूज अगर मैं करती हूँ, इफ आई एम पुटिंग इट ओवर 1 एंड 1 को मुझे यस करना है, इट्स गिविंग मी एन एरर. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट्स गिविंग मी द एरर? क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं? क्यों It's नहीं a कर data पा रही match. It's a numerical हूँ? value. एग्जैक्टली उसका डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है. सो फॉर दैट आई नीड टू गो अहेड एंड चेंज द डेटा टाइप फर्स्ट. आई जस्ट पुट इट ओवर हियर टेक्स्ट. ठीक है, नाउ आई ट्राई टू डू इट. सी रिप्लेस करना भी इज नॉट दैट मच इजी. ठीक है, इट्स लाइक समटाइम्स इफ यू आर गेटिंग एरर, make sure that you are reading about that error. Okay, now it got changed. Okay, now I'll just quickly go ahead and replace the 0 with no. So I can do it now. So अभी मैंने ये कर लिया. Okay, now if you want you can go ahead and change the data types as well here. Text CME है या नहीं है, interested है या नहीं है. ठीक है. Okay, so if I'm getting 1, give it as yes. Okay, if I'm getting null, say it as no. The same this thing. अगर 1 आ रहा है तो यस कर दो. अगर नल आ रहा है तो नो कर दो. दिस इज हाउ मैंने उसको यस एंड नो में कन्वर्ट किया, जस्ट टू गिव अ प्रॉपर इनसाइट टू दैट. ठीक है, सॉरी ये भी एक है. ओके, ओके, नाउ I'll ask you one thing. सपोज वैक्सीनेशंस कितने के हुए हैं, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे इनटू दिस कैटेगरी? मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितनों के वैक्सीनेशन हुए हैं. हाउ यू कैन पुल आउट? बिकॉज यहाँ पे तो मैं टोटल काउंट तो नहीं दे सकती, बिकॉज यहाँ पे यस नो का कैटेगरी मिक्स आया है. सो हाउ कैन आई डू इट? With yes values only. ओके, राइट, एग्जैक्टली वी कैन डू इट बाय यूजिंग यस, बट यहाँ पे हमको कंडीशंस उनके लगाने पड़ेंगे व्हेन वी आर showing the count. Okay, so that is a difference. Okay, now this is something what I have already done over here. So अगर like I want to make changes over here, I'm just going to click apply.
अभी हम गोइंग टू शो यू कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे उसका आउटपुट कैसे दिखाएंगे, ठीक है? Okay, fine. I'm not dealing with more into designs, okay? I'm just showing up you some kind of things what we can do it, what all things we have done it into the database, okay? क्या क्या हम बना सकते हैं? One is like you can create like जो हम लोगों ने feedback type बनाया है, so that you can put it in the slicer. ये एक आप चीज कर सकते हो उसमें, ठीक है? Designing I'm not doing, okay? Please make sure I'm not doing, okay? Okay, designing part I'm not doing it. Okay, now ye ek type of slicer you can add into this. Otherwise you can quickly go ahead. Okay, okay, so इसका एक टाइप होता है टाइल, टाइल ऑल्सो इज लाइक गोइंग टू गुड। टाइल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग हमारे पास कम टाइप ऑफ कैटेगरीज होते हैं। So this is enough, way enough, like you can put it here in the corner if you want this. So this kind of thing also you can use it as a corner may you can put out and you can check the category. So different kind of slices we can use onto this. Now यहाँ पे if you can, if you want to show these records, so I'll just take a card over here in the top area. Okay, so here I'm going to take in this also you can take both the things together, ठीक है? Feedback का count also you can take it and you can write a dax as well for that, या फिर feedback का count. So this is first feedback. I'm taking a count on this. Okay. This is total 160 count है, means 160 feedback जिसमें से AMS 14 है. So it's like it's going to give you a count, okay? So यहाँ पे I'll just give a name. So there are two ways of doing that. Either manual इसको ऐसे put up करो, otherwise DAX you are going to write it. So DAX मैंने आपको already show किया था last time. So like this, you can go ahead and write down the feedback count. So this is gonna give me a feedback count. Abhi, what I want, I am going to create this particular cat typescape. This typescape मुझे analyze करना है. I want to see कि किसका quantity कितना है. So I'm just quickly going to take a chat over here. I'm going to put a feedback का type और इसमें feedback का x axis में count. This is something I think it's ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव लाइक एनालाइज दिस इनटू पर्टिकुलर थिंग्स। इट्स लाइक उनके काउंट फीडबैक के एंड देन कौन से किसका कितना अवेयरनेस। आई जस्ट क्विकली, सो आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन डिजाइन। 2 सेकेंड। ओके, सो just come back over here. Okay, so this is like I'll just show you in terms of डेटा लेबल्स हो गए, इसको ऑन करते हैं। ओके, नाउ आई गॉट दिस थिंग, ठीक है? प्रोग्राम अवेयरनेस इज दिस मच, अवेयर AWS इज दिस मच, रिकमेंडेशन इज दिस मच, प्राइस इतना है, बिजी इतना है, वीडियो इतना है। नाउ व्हाट यू कैन पुल आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, क्या एनालाइज करोगे बताओ? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? क्या बता रहा है आपको ये ग्राफ? व्हाट इट इज टेलिंग यू? क्विकली टेल मी। ऑब्वियसली it's telling you something, right? The graph is telling you, क्या बता रहा है? Yeah, I It's mean saying the you kind of something. feedback we have, uh, which feedback Yeah, we that have more, which we have less. एग्जैक्टली। तो फीडबैक में से क्या निकाला हम लोगों ने? वी केम अप विद अ रेजोल्यूशन कि प्रोग्राम अवेयरनेस में is like which is on the highest quantity. So the company can go ahead and make some seminars या फिर कुछ ऐसे facilities वो बनाएंगे कि जो कि what he is like we are getting into that कि HCPs में जो प्रोग्राम अवेयरनेस है उसका डिमांड ज़्यादा है, उस पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दैट।
तो दैट इज द रीजन दिल पुट अप सम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इनटू दैट कि वो लोग बहुत सारे कुछ चीजें सेमिनार्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और दिल कम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ वैक्सीनेशन which they wanted for the program awareness. So they wanted to know more about the program, that means. So this is what they are going to go ahead and work on it. तो यहाँ पे उनका business, like they can help out the HCPs, उनके concerns resolve कर सकते हैं. Okay, now this is how is what they can analyze from the feedback में से ये मेरा एक particular outcome निकल है. So it's like I'm just taking this graph for understanding. आपको चाहिए you can go ahead and change whatever graphs you want to do it. Okay, I'm preferring this graph because it's giving me a deep insight for that. Properly एक hierarchy manner में आ जाता है. Okay, so this is how I can go ahead and do that as well. Now, like for example, suppose मुझे I want one graph over here. Okay, okay, so this is one kind of graph. So otherwise you can change it to donut as well. So whatever you like it. Okay, okay, so this is one. Copy that, paste it down. You're taking one more graph, that is for CMA. I'm taking one more graph. Okay, it was executive feedback. Interested it was. Okay. Okay. तो मैंने I'll just keep this in the corner for the time being. So if you can see over here, तो मुझे यहाँ पे तीन graphs मिल गए. Okay. So I'll just give a data labels for that. Okay. So this is giving me certain kind of counts over here. Like this is like three graphs I have created, जो कि हमारा yes no वाला column था. From that particular yes and no मैंने दो bars create किए. So this is what I wanted to show, yes and no का count. So this is like the heading which is given count of feedback by interest. So you need to go ahead and change the heading first. So I'll put interested, sorry, interested HCP. Okay, this I'll put awareness. Okay, awareness. Let's see. So like this, I'm changing the titles over here. CME HCP. ओके, तो मैंने इसको टाइटल पुट अप किया इसीलिए बिकॉज इट्स गिविंग मी द नॉलेज फॉर दैट कि इंटरेस्टेड एचसीपी यस एंड नो का काउंट क्या है, इसका काउंट क्या है, एंड देन सीएमई का काउंट क्या है इन टर्म्स ऑफ यस एंड नो. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट अ ग्राफ ओवर जस्ट. Okay, designing you can put it as if you want. I'm just creating the graphs for the insights what we have came up over here. Okay, okay, so this is how it's giving me the count. Okay, okay. So इस तरीके से what we have done it today, it's like we have created some graphs and we have learned how to use the conditional formatting और वो कहाँ पे use आती है, what is the use of that conditional formatting into the report. So that is what we use the conditional. So there is no, like we can write a DAX as well, इसके लिए DAX भी लिख सकते हैं, but DAX यहाँ पे required नहीं है. We can use a power query for that. तो यहाँ पे हमने क्या use किया, हम लोगों ने पावर क्वेरी यूज करके वी केम अप विद दिस काइंड ऑफ resolution. So this is like what has helped me with yes and no.
कि मैंने जब उसको डिवाइड किया तो आई गॉट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, सो लास्ट टाइम आई हैड शोन यू समथिंग कि हम लोग उसका लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, रिमेम्बर लास्ट टाइम आई हैड शोड यू कि अगर हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है तो हाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट द लेंथ फीडबैक का। एनीवन हैज आइडिया what resolution I have given to you? Okay, I'll quickly show you now that as well. So I'll just remove this. अभी मुझे ये रिपोर्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है. I'll click on transform. Okay, so this is my data source पे आती हूँ मैं. Okay, so I'll go ahead and analyze this thing. Okay, it has been converted. Okay, I need to change this thing particularly there on the top. Just a moment. Okay, use first row as a header. I'm clicking over here. Okay, so this is what I have done it to put it in a header quantity. Okay, okay, fine. So this is how I came up with this particular record. I'll show you something over here how we can do it. Okay, I'll just click a copy of this first. I'm create. Okay, I'll just go in the last one. Okay, okay, maybe I just deleted something from here. Okay, I'll just ignore this thing, particular thing. I'll just focus on one thing. What we need to supposed to. Okay, I think now it should be okay. Okay, fine. So अभी मैं इसका एक duplicate create करूँगी. I'll just check if my this error is gone. Okay, it has gone. Okay, I'll just click on duplicate on this. Okay, in this duplicate, I'll replace that. I'll transform that into length. See, अब मैंने क्या किया यहाँ पे? I have done nothing. मैंने feedback का copy बनाया and I just converted that. उसको मैंने transform किया उसके length में. Means it is going to count the number of uh, like
the letters into that. So this is one thing what I need to do it to determine कि कौन सा मेरा lengthy है. So I'll just write down length. नहीं, length नहीं. Uh, tedious. Okay. I'll write down tedious. Tedious मतलब कितना lengthy है वो, ठीक है? I'll just click on close and apply. Okay, so I want to find out the tedious of that. Okay, for what? For the feedbacks. I want a table over here. So मैंने यहाँ पे एक टेबल फाइंड आउट किया, एक टेबल मैंने बनाया. Okay, okay. Instead of feedback, I'll pull out HCP, name of the HCP. Okay, instead of count, I'll put don't summarize. कुछ टीडीएस है यहाँ पे डाले हैं एंड आई सेड डोंट समराइज, उस पर कुछ कैलकुलेशन नहीं करो. नाउ हियर व्हाट आई वांट टू पुट सम फिल्टर ऑन दैट. ये फिल्टर मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था. अगर मुझे टॉप 10 ऐसे एचसीपी निकालने हैं जिसने बड़े फीडबैक्स दिए हैं, लाइक लेंदी फीडबैक्स दिए हैं, तो क्या करूंगी मैं, कौन सा फिल्टर यूज करूंगी यहाँ पे? Top N. एग्जैक्टली. So this even you can write it in the DAX, okay? Top 10 in terms of what? In terms of TDS. I'll just pull out TDS over here. Okay. Is that sum? No. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सम एंड काउंट हम लोग मैक्सिमम लेंगे, बिकॉज हमको वो वाला उनका टीडीएस चाहिए जो कि मैक्सिमम थ्रो करता है. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड. सो वी केम अप विथ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओवर हियर. कि आई केम अप विथ अ टेबल which is giving me. I'll just increase the size of this so that it's properly visible to you. Okay, now I think it's visible to you. Okay, so मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया which is giving me the TDS, length of the TDS, means उसका length, like which HCP has given a longest, like a lengthiest one, a TDS one. So if you want, इससे better you can use the other graph as well. Okay. So this is again giving you a sum, but I want to concentrate on maximum. कि उसने longest वाला कौन सा दिया है. So this is how you can put the data labels over here so that it gives you. Okay. Now see, यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि जो HCP है JC Mohan, he has written a lengthiest one TDS. Okay. Then Arjit Singh, he has written this kind of TDS, and this one has given, this is the second highest one. So like this आप ये categories decide कर सकते हो. From this particular categories you can decide कि कौन से HCP ने lengthiest one feedback दिया है. So this is how you can find the categories of that particular HCPs. Okay, so I'll just create one more graph over here. So anyways, you can add a slicer as well into that. Okay, I'll just put a TDS over here. Maximum. Okay, now if you can see, this is giving me a different kind of insight. ठीक है, ये एक अलग insight एस्पेक्ट है और यहाँ पे एक अलग एस्पेक्ट है. एस्पेक्ट क्या है अभी यहाँ पे, like if you can see यहाँ पे रिकमेंडेशन जो ऑप्शन है, रिकमेंडेशन फीडबैक टाइप में सबसे लेंथीएस्ट टीडीएस आया है, लाइक लेंथीएस्ट फीडबैक आया है. So that feedback is into maximum. This is the reason I'm focusing on the maximum thing. ठीक है, and the next other में कोई एक आया है. Now program में one has come and the other which has come
is for the AWS. Okay, I'll quickly show you something over here. I'll put this into a table. What's the feedback? Okay. See, if I'm clicking on recommendation, I'm getting an option over here. Recommendation में तीन categories है, like तीन HCP है. One is Dr. JC Mohan, Ajit Sai, and the particular Dr. Mangesh. Okay. Now, if I show you the HCP name over here, ठीक है, ये देखो. अब ये ग्राफ आपको ये इंसाइट देगा कि पर्टिकुलर इसका लाइक जो पर्टिकुलर आपने क्लिक किया है उसका फीडबैक एग्जैक्टली क्या था. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई रिमूव एचसीपी एंड द टाइप, आई एम जस्ट कीपिंग द फीडबैक. ठीक है, सी अभी इट्स लाइक ये मुझे बॉक्स पूरा फीडबैक्स दे रहा है, लाइक ऑल द फीडबैक्स, इट्स कमिंग अप विद ऑल द फीडबैक्स. आई विल जस्ट इट हियर अप. आई विल जस्ट ओके. So ये एक particular, if I want to check out, okay, I want to check out what all things like JC मोहन का सबसे tedious है. Okay, what he has said in the feedback, उसने feedback में क्या बोला है. So I'll just click on JC मोहन और मुझे यहाँ पे उसका feedback दिख जाएगा. It's like आपके सामने everything is there और you can see the categories as well. अगर आप इसको change करो, you just come up with the funnel chart. Okay. Instead of funnel, you can put something else over here, that is gauge. तो नहीं, okay, हाँ, gauge would be better into this. ठीक है. Now I'll show you something over here. ठीक है, अभी it's showing you up कि in this particular gauge, okay, in this particular gauge, तो particular जो जेसी मोहन है, in that जेसी मोहन ने सबसे टीडीएस फीडबैक दिया है, तो उसका काउंट क्या है, 1759. That's the maximum one you can say into that particular this thing. If you want to check out the recommendation for that, like feedback type. ओके, तो दिस इज गोना गिव यू द फिगर एज वेल. ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिगर आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई क्लिक ऑन जेसी मोहन, यू कैन सी देयर आर टू फीडबैक्स गिवन बाय जेसी मोहन. देयर इज वन फीडबैक गिवन बाय दिस इज वन फीडबैक. तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट हियर कि कौन से उनके रिलेटेड फीडबैक्स है. सी यहाँ पे वो फीडबैक आपको रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा. So like this you can use any other charts as well. यहाँ पे आप you can decide and divide those categories, and if you want you can put the any kind of slices if you want. अभी यहाँ पे जो slices है, um, academic status, let's put that. If you want to categorize now academic स्टेटस में, ठीक है, तो ये देखो ये कुछ आपके पास एकेडमिक स्टेटस आ गए, बट दिस इज नॉट, दिस इज this is not something, it's like where you can divide that into slicer, because slicer में category should be not that much, but this also depends into a client requirement. Like if they want to divide that into those categories as terms of slices, you can do that as well. Okay, तो कभी कभी ऐसा भी होता है they wanted, but ये it's like there are too many columns into that. So इसके लिए it's going to take lot of space. यहाँ पे आपको decide करना है आपको कौन सा settings try करना है. It's like बहुत सारे जब options होते हैं आपके स्लाइड इसमें slicer में, so instead of vertical list you should always go with the drop down one, because that is going to take a lesser space. तो ये decision आप कब लोगे,
दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेक इट व्हेन यू फील लाइक, आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर स्लाइसर में, लाइक इस कैटेगरीज में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे पुल आउट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ करेक्ट रिकॉर्ड. It's like बहुत सारा space लेगा. It's going to show you the correct record, I'm sorry, but it's going to take a lot of space in your particular report. So that's the reason जब भी आपके पास categories बहुत ज़्यादा है, you need to make sure that you're putting that into a drop down. ठीक है? Now see, this is the way I came up with the report. Guys, I'm not focusing more on the design part. ठीक है? I'm just focusing on the aspect. Okay? So this is what we have learned in today's session. One is like I wanted to give you the whole set of time for conditional formatting, क्योंकि ये conditional formatting बहुत important है. It's like why it is important, like for example, like whenever you want to put some things over here, it's like in terms of certain kind of conditions, like particular ye group hai, like you need to put it a red color for that, so you can put that as well. So like this you can put the conditions for that particular category. So this is how is known as your conditional thing. Okay, now I'll just show you something over here. Okay, I hope you understood the conditional, like how we can create the custom column, conditional columns. Got it? I hope this is clear. The concept is clear to you, like how you're going to go ahead with the conditions, like custom conditions. Okay, so that is custom conditions in the sense you need to create a new column depending on that particular condition. So whatever condition you need to follow that. So I'll be giving you a data set today. In that you need to find out, you need to do these workings. It's like you need to apply the workings and just show me a click of a picture. जैसे कि मैंने, I'll just show you this. Okay, this feedback type, like you can see here, जैसे मैंने ये pull out किया from this particular feedback का data using a condition. Okay, the custom condition, we came up with a report on that. So I want you to do the working on this as well. I'm going to give you a kind of a data set which is going to give you a text based column. उस text based column में से you need to come up with this kind of database. Okay, like these kind of categories. Okay, I'll just come back over here now. Okay, so this is what we have created something about the condition. Now let's see if इससे ज़्यादा हम लोग रिपोर्ट को पुल आउट कर सकते हैं या नहीं. Like the reason I'm saying you, कभी कभी ये होता है कि it's like you need to think on your part. ये तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे कर दिया है, but you need to think on the part कि आप और ज़्यादा क्या बना सकते हो उसमें, what all other things you can make into that. Okay, so think of the cards, like कौन से cards आप इसमें बना सकते हो. Now as if I told you that हम इसमें अभी फाइंड आउट करते हैं कि कितने अवेयर है. लेकिन लिसन टू मी वन थिंग. ओके, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. हर विजुअल हर एक के साथ इंटरेक्शन कभी कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर आर सम कैटेगरी जिसको आपको इसके साथ डिवाइड नहीं करना चाहिए. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग you should learn how to do the interactions between the visual. I'll show you that as well. So अभी I'm just making a card. आई डोंट नो, ये मुझे फीडबैक काउंट दे रहा है, अब ये मुझे अवेयरनेस का काउंट देगा. सो आई डोंट वांट अवेयरनेस का काउंट, आई वांट द काउंट ऑफ दैट. सो व्हाट काउंट आई वांट? आई वांट only yes wala category. So what I'm going to do, I'm going to filter on this visual. What I'm going to filter, कि I just want yes data. So see, I got a card for here which is giving me aware count, means total kitne awareness hai. This is what it's going to give me the records over here. Now I want one more feedback which is going to tell me what's the CME ka count. So simply what I'm going to do, I'm going to click on count. But यहाँ पे if you can see that is awareness का दिया हुआ है. Remove this first. Okay, so this is gonna give me CME का count. Just a moment. Okay, so I need to apply a filter on this visual, so you can put it only yes. So this is gonna give me CME ka count.
टोटल कितने CME अवेयरनेस थे? Okay. Now I want something for the interested categories, a graph for that. See what I'm just doing, I'm just occupying these places. So there is no limit of creating of the dashboard. Okay, you can think and you can create lot many things into that. So same thing I'm going to do it over here. This is gonna give me, I don't want ये पहले, since I'm copy pasting this, okay, ये copy paste कर रही हूँ, that is the reason it's happening, okay. Otherwise you can take a new one मैं इसलिए नहीं लेती, then again you need to work on the designing part again. Okay, I'll just pull up your interested and click on yes. Yeah, this is gonna give me the count for particular records. Okay, now this gave me, okay, now this gave me certain kind of graphs over here, like feedback count कितना है, awareness count कितना है, CME count कितना है, and interested one कितना है. So this is how I pulled out some kind of categories over here. So this is what I have done it. It doesn't mean like जो मैंने किया है, your way of doing the reporting is going to be similar only. नहीं, it's like आप लोग इसके अलग way out में कर सकते हैं. In the different way out things you can do it. Like you can create more different things into that. I came up with this thing. Okay. Now if you want here to display something, जो feedbacks है, total feedbacks है, top 10 अगर आपको यहाँ पे डालने हैं, so simply you can do that as well. So for that, since ये condition मैंने already यहाँ पे filter apply किया था top 10, so I'm just going to copy this, put it over here, top 10. Simply I'm going to go ahead and take a table. Okay, मुझे यहाँ पे ये define करना है feedback, top 10 वाले feedback. Okay. See, I got some top 10 wale feedback. If you want, you can categorize that into ascending and descending order. Like what I'm doing over here, I'm just putting that into in terms of like उसको आप decide कर सकते हो. Like if you want a print, अगर आपको print के लिए इसको particular visual को use करना है, तो you can do it that as well. I'll just increase the size for that so that it's visible for you. Okay, I think this is okay. Okay, now I'll tell you why exactly I have used these kind of categories. इसको मैंने properly tables में क्यों डाला है? तो tables में डालने का reason ये है, like for example, certain kind of executive, उसको उसके ऊपर एनालाइज करना है, उसको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर एचसीपीज ने फीडबैक इतना लेंदी दिया है, सो ऑब्वियसली दे वांट आइदर वांट टू स्पीक समथिंग विद द कंपनी, और आइदर दे हैव कंसर्न, या फिर कुछ तो है दैट दे हैव गिवन सो मच टाइम टू दैट. सो इफ दे वांट इट इनटू अ प्रिंट फॉर्मेट, अगर प्रिंट में उनको चाहिए रहता है, सो दैट इज द रीजन वी लाइक यूज दीज काइंड ऑफ विजुअल्स, उसको हम लोग टेबल में पुट अप करते हैं. बट sometimes it's too much, the data is too much to be printed, बहुत ज़्यादा होता है. So in that Power BI has a different approach. Can anyone tell me, अगर data बहुत ज़्यादा है and I want to put it and uh, put it on the paper, मुझे एक proper format चाहिए, तो what facility I'm going to use? Can anyone tell me? Uh, It, we want the data in हाँ. format. So it's a facility, what we are going to use is a paginating report. तो जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, डजंट लाइक गिव्स अस टेबल, टेबल का भी एक लिमिट होता है एक्चुअली इन दिस टेबल. लाइक whenever we want a print for that, I'll show you export. अगर आप export पे क्लिक करोगे, see I have put a data over here, उसको मैंने export किया. Okay, the reason I was saying you this thing, okay, the reason I have like I was explaining you this particular part now. See मैंने क्या किया, ये TDS feedbacks को इन दो
those tedious feedbacks I have taken up into a table over here. The reason I have taken up into the table, ताकि आपका जो client है उसको वो print निकाल के use कर सके ना. If you can see जो आपका data है, your top 10 वाले customers वो इस पे आ गए इजीली एक्सेल शीट पे. इसको आप डाल के यू कैन प्रिंट एंड वो एग्जीक्यूटिव को आप काम करने के लिए दे सकते हो कि दिस इज द डेटा, गो अहेड एंड डू इट. So this is what, that is the reason I'm using a table over here. Now if you want, okay, if I put it over here, feed, sorry, okay, feedback type also here. ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलर टेबल में फीडबैक टाइप डाल दिया है. I'll just put it on the second place. ठीक है, feedback type I have put it over here. Now if you want to give your client as per the type of those things, so you can do that as well. अभी मैं what I'm going to do, instead of top 10 categories, okay, अब I'm removing this filter top 10 का category. ओके, ये मैंने हटा दिया, इसको टेडियस मैंने हटा दिया. मैंने सारे फीडबैक्स आई एम टेकिंग, सारे के सारे फीडबैक्स, तो मैंने ये सारे एचसीपी, उनका टाइप और उनके फीडबैक्स, बहुत सारा डेटा आ गया इसमें. ठीक है, नाउ टू टेक अ प्रिंट आउट इन एक्सेल शीट, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, ओके, समटाइम्स इट्स नॉट इजी. तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक ये डेटा आपके पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के नाम पे मैं डिवाइड करूंगी. आई एम गोइंग टू पुट अ फिल्टर ओवर हियर. So I have added a filter. Just a moment. ओके, तो एक मैंने यहाँ पे स्लाइसर लगाया है अभी. सो जस्ट क्विकली ऐड ओवर योर एग्जीक्यूटिव नेम. ठीक है, तो मेरा एग्जीक्यूटिव नेम आ गया यहाँ पे. दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स पर्टिकुलर. तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ ड्रॉप डाउन. इंस्टेड ऑफ वर्टिकल आई विल जस्ट पुट अ ड्रॉप डाउन. ओके, ओके, सो आई हैव एडेड अ स्लाइसर ओवर हियर. अभी मुझे ये फीडबैक्स पर्टिकुलरली फीडबैक टाइप से निकालने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल. सो आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर स्लाइसर ओवर हियर. So two categories I'm deciding. Now I'll explain you why I'm adding this. Reason क्या है मेरा? There's a reason behind this, okay? Oh, sorry. So there's a reason behind this, that is instead of executive, I'm going to add a feedback type over here. Okay. So two slices I have added. Now, if I want to give some data, give some feedbacks to a like executive, suppose I'll say, I'll just go down. ओके, प्रियंका, सपोज प्रियंका मुखर्जी को मेरे को उसका डेटा देना है फॉलो अप करने के लिए. सो आई जस्ट सेलेक्ट प्रियंका मुखर्जी. ये आ गए आपके प्रियंका मुखर्जी के सारे फीडबैक्स. नाउ आई वांट टू फोकस ओनली, ओके, प्रियंका के ऑलरेडी सिर्फ एएमएस ही कैटेगरीज है. सो मुझे सिर्फ प्रियंका मुखर्जी को डेटा देना है. आई वांट टू गिव अ डेटा ओनली टू प्रियंका मुखर्जी फॉलो अप करने के लिए. मुझे बाकी के इनका उनको नहीं, क्योंकि जो बाकी के जो लीड्स है, अगर मैं प्रियंका मुखर्जी को प्रिंट दूंगी तो शी कैन टेक द लीड्स ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव. सो आई वांट ओनली प्रियंका मुखर्जी के. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई दैट इज द रीजन आई हैव पुट दीस स्लाइसेस पुट अप करके. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डेटा. ओके, सो आई जस्ट, प्रियंका का डेटा है ये, तो गिव इट टू प्रियंका. Just quickly come over here. So see, I got some feedbacks which belongs only to Priyanka. सिर्फ प्रियंका के ही records है. So I'll just quickly take a print और प्रियंका मुखर्जी को दे दूंगी. It's like you need to follow up these things. So like this आपको ये report useful है in terms of business process as well. So this is the reason, ये एक reason है why exactly we deal with the tables kind of visuals. Tables हम कहाँ use करेंगे, तो ऐसा नहीं है it's like you are liking that and you'll go ahead and put the table visual. नहीं, आपको पसंद है, you're liking that, you'll put it. नहीं. So that is what, as an intelligence developer, you need to decide कि कौन सा visual कहाँ डालना है. So that is the reason in every class I am taking up these concepts, so that you should be aware कि कौन सा visuals हम कहाँ use कर रहे हैं. So they are all real time of projects, and
That is how in terms of that you need to decide कि कौन सा visual आपको कहाँ पे use आएगा. ठीक है. All right. So in this session, एक single feedback column से, which was very complex, we could pull out 3 reports here. See, like this, we could pull out 3 reports. We came up with the resolutions on the 3 reports. सबके use अलग है, सबके concepts अलग है. But this is how with the single conditional formatting we can do. Sorry, with the single conditional column formatting we could do all these things. Okay. All right. So in the next session, we'll come up with the next topic. So I need to take the conditional color formatting of yours. So that is what we are now we are going to take up in one of the reports. Okay. Okay. Nancy, I was asking, Yeah. can we also see certain cases of DAX use so that, I mean, we can be good in that uses as well? DAX is like where you want to see. It's like in the last Mhm. reports we have seen DAX. We are covering हाँ DAX in हाँ every reports. Yeah. आज का जो session था because I wanted you to focus on the conditional हाँ concepts. हाँ हाँ. So that is the reason I did not mixed up with the DAX. क्योंकि जब मैं DAX Okay. डाल दूंगी तो आपके हाँ. लिए ये concept पीछे रह जाएंगे. So that is the हम्म. reason I'm taking some of the time DAX या फिर some of the time Power Query. So it doesn't get Okay. mixed up in your concept. But जो Okay. भी हम लोगों ने DAX किया है अब तक, you need to Mhm. implement in your data set. And Okay. let me tell you, in the further classes, we are going to move ahead with the complex DAX structures as well. Okay. Okay. ठीक है? All right. हाँ. So just for your well-being, like to be हाँ. aware, we are going to cover almost the basic, like the critical DAX as well. Okay. Okay. Got it. All right. Yes. Yeah. ठीक है. चलो. Thank Bye you. bye. Okay. We'll be Good day. getting this to replicate, I mean, to practice and to share it Yeah, with. yeah, a similar kind of data set I'm going to share it because there Okay. are certain kind of limitations for me for sharing the data as well. Yeah, yeah, So yeah. yeah, Okay. this is a company based data. What I Okay. wanted to teach you, because the reason is like Mm-hmm. I wanted like you to be aware with these kind of data as well. So Mm-hmm. I'm going Yes. to give you a similar kind of database. Okay. Okay. Got it. Today you'll be getting a practice, and the thing, the from that particular text based column you need to pull out, as if a conditional column, you need to pull out the categories and Mhm. just show me a click on that. Okay. Got it. Okay, fine. All right. Bye And bye. Nancy will have class tomorrow. You can confirm with them and let me know You if are they are available okay. tomorrow. Yeah, yeah, if they are Okay. okay, I'm okay to take at 9 a.m. because later on I would be having the plans, but in the morning I can take it if they are okay with it. Are you all available, guys? Yes, yes, yes. Yeah, even if like Okay. since it is a weekend, if you have later on plan, I'm okay with 8 a.m. as well. So 8 a.m., 9 a.m., whatever okay for you, let me know. Okay. Yeah, you can confirm with them and let me know whatever time is feasible for them, 8 or 9. Fine. Yeah. Okay. Yeah. Bye bye. Okay. Thank you.